Download the app Maths Guide from Google Play today. एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर दो वर्कर्स P एंड Q का डेटा दिया हुआ है। उनका मीन टाइम टू कंप्लीट द जॉब इन आवर्स वो दिया हुआ है 33 आवर्स एंड 21 आवर्स रिस्पेक्टिवली, और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 9 आवर्स एंड 7 आवर्स रिस्पेक्टिवली। We have been asked which worker is more consistent. जब भी consistency की बात आती है, you should always think of coefficient of variation. तो जिसी भी वर्कर का coefficient of variation का value less होगा, वो ज़्यादा consistent होगा. So lesser the value of CV, the more is the consistency. And second पूछा गया है which worker seems faster. तो पहले हम focus करते हैं consistent कौन है वो ढूंढने में। अब CV का फॉर्मूला है SD अपॉन मीन इंटू 100। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वर्कर P होगा स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर वर्कर P मीन टाइम फॉर वर्कर P इंटू 100। अब स्टैंडर्ड डिविएशन P के लिए दिया हुआ है 9, देन मीन टाइम दिया हुआ है 33 इंटू 100। So coefficient of variation for worker P is 27.27%. Similarly, we'll calculate CV for worker Q. अब CV के लिए we require the standard deviation जो worker Q के लिए दिया हुआ है 7, फिर mean time is 21, so upon 21 into 100. So CV for worker Q is 33.33%. Now we observe that CV of P is less than CV of Q, right? So coefficient of variation for P is less than coefficient of variation for Q. Hence we conclude that P is more consistent. अब second पूछा गया which worker seems faster. तो अगर हम mean time देखें तो worker P complete करता है job 33 hours में and worker Q job complete करता है 21 hours में. So we could say that worker Q seems faster. So considering the mean time for completing the jobs, we could conclude that worker Q seems to be faster. So worker Q faster है, लेकिन worker P ज़्यादा consistent है. So this was the solution to question number 6. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.